the man who is carrying dreams of billions of people, the man who needs no introduction at this moment. We've got Mr. Ranjit Bajaj along with us. सर इसके बाद क्या AIFF ने आपको कभी रीच आउट किया by any statements by or by They are any paying 70 crores. Federation is paying 70 crores to them for the play. AIFF ने आपको क्या ब्रीफिंग दिया था रोल के लिए जो Okay, Ranjit Bajaj is not going to do well if the team does well. India will do well. Getting it. One is with Bal Ranjit Bajaj getting there, but I'm going to fucking get us there. Welcome everyone. Welcome to Desi Dribblers. I'm Soumyaranjan Babu, and you have the destination jahan football ho fun or analytical. We have Anshuman along with us, and then we have Lucky Reds as well. You guys know him from his shit posting on Twitter. But today we are with a man who is really special to Indian football, especially the grassroots. The man who is carrying dreams of billions of people. The man who needs no introduction at this moment. We've got Mr. Ranjit Bajaj along with us. Hello, sir. Good evening. Thank you so much for having me and putting all the pressure on me. Billions of dreams on you. As a come tha. But thank you so much. I love it. I love the pressure. Pressure is what makes me go. And to even Anshuman and Lucky, thank you so much for having me on Desi Dribblers. It's a pleasure. And let's rock it. Let's start. Good evening, sir. As Anshuman, sir, I would like to ask you the first question, which is, sir, you have won so much for the country. You have made the whole India proud. You have done various things for our country. Sir, the main question is, how are you? आप कैसे हैं? आपको भी कैसा feel हो रहा है? Unfinished business. Survived. क्यों अभी तो पार्टी शुरू हुई है? This is not the end. This is the first start, man. This is the start of what I'm doing. So when I talk to you after 10 years, then I would have finished it in 2036. When I've got the gold, Olympic gold around my neck. So that's the second part. Not even the first part. First part होएगा, second part मैं बोल रहा हूँ. Second part होएगा. That's the finished business. सो सर इससे स्टार्ट करना चाहूँगा. अंडर 15 वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है. सो आपको मैनेजरियल रोल के लिए अपॉइंट किया गया था. सो आई वांट टू नो कि AIFF ने आपको क्या ब्रीफिंग दिया था रोल के लिए जो मैनेजरियल रोल था. ओके सो नॉर्मली क्या होता है कि सपोज लकी मैं तेरे को जॉब दे रहा हूँ तो मैं पहले तेरे को जॉब देने से पहले तेरे को मैं बोलूंगा भाई तेरा जॉब क्या है, ये जॉब है तेरा, ठीक है. तेरे को मैं ये नहीं बोलूंगा कि ओके फाइन यू आर द CEO, मगर मैं फिर जब तू बोलेगा डू फिर मैं बोलूंगा डू यू एक्सेप्ट लकी, डू आर यू द CEO, तो बोलेगा यस यस आई एक्सेप्ट, आई एम द CEO. फिर उसके अगले दिन आपको फिर जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते लकी आपने ना हर रोज यहाँ पे बाथरूम साफ करने हैं और यहाँ पे पोछा लगाना है, मगर आपका नाम CEO है, ठीक है. So that's not how you offer someone a job. When you offer someone a job, when you offered him the job, that is when you give the roles and responsibilities and the job description. Not after he's accepted the next day after that. Okay? Now I'll tell you why this was a scam. Because जो चीज़ें मेरे को उन्होंने ऑफर की थी, जो ऑफर की है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बाद में ईमेल आई है. Okay, so basically, so I'm supposed to look after discipline of the team. I'm supposed to do reporting every day ऑफ कितना पैसा खर्च हुआ है वहाँ पे और कितना बैलेंस में रह गया मेरे क्रेडिट कार्ड में, जो वो मुझे देंगे वो जो देंगे. फिर मुझे सारी मेकिंग श्योर ऑल द फूड इज़ प्रॉपर, द टिकट्स आर डन प्रॉपरली, द होटल बुकिंग इज़ डन प्रॉपरली. एंड साफ लिखा आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्काउटिंग, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्निकल कमेटी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लेइंग स्टाइल और मेकिंग सब्सटीट्यूशंस और फॉर डिसाइडिंग हु द टीम इज़ और एनीथिंग डू विद फुटबॉल, ठीक है. सो प्रॉब्लम ये है कि जब मैंने अप्लाई किया था आफ्टर दिस, बिकॉज यू आर रिकॉर्डिंग दिस, आई एम गोना सेंड यू द थिंग जो मेरा एप्लीकेशन था, सो यू कैन पुट इट अप फॉर एवरीवन टू सी. उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन था कि मैं मैनेजर जब अप्लाई कर रहा हूँ आला एलेक्स फर्गसन, आर्सन वेंगर, हैरी रेडनैप, वो वाला मैनेजर, नॉट तुम्हारा 1983 वर्ल्ड कप वाला मैनेजर जो इंडिया क्रिकेट टीम के साथ गया था, ठीक है. वो वाला मैनेजर नहीं बनना, बिकॉज वो वाले मैनेजर किसको लगाते हैं हर बारी. गो बैक एंड सी द हिस्ट्री ऑफ AIFF. All the managers have been the secretaries or some chamchas or the president जिनको वो फ्री ट्रिप पे भेजते हैं. उनके लिए वो रिवॉर्ड होता है कि तुम जाओ कर लो. तो मैं तुम्हारे से रिवॉर्ड मांगने अजरबैजान जाना तुम्हारे से, तुम्हारे पैसों पे सालो. दैट्स द प्लेस. अगर तुम्हारे से रिवॉर्ड ले अजरबैजान, तुमको भेजना अच्छी जगह पे भेजो, माल्दी भेजो, क्या अजरबैजान भेज रहे हो. सो नाउ सी हाउ दे फक अप देयर ओन टीम्स. नाउ एम आई play guy who's a very experienced person recently being a manager? No. मतलब रेयर जो इन्होंने बोला मैनेजर, no. तो तुमने the best manager I've ever seen in India, he's still the best manager, is Velu, who's currently the manager, and he's been the manager for last 10 years. He's a wonderful guy, single-handedly he can do everything. तो तुमने वहां पे भी ले ली टीम की क्योंकि वहां पे मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी चाहे रंजीत बजाज हो, बिकॉज जो मैंने
एक्सपर्ट होता है भाई। मेरे को तुम रंजीत बजाज को तुम बना दो कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट है, तो मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट अच्छा थोड़ा करने लग जाऊंगा यार। एवरीबडी हैज देयर एक्सपर्टीज। देन जो बंदा एक्सपर्ट था 8v8 में, तुमने उसको लगाया नहीं, विच इज मी। लगाया तुमने किसको? जो एक्सपर्ट नहीं था। मगर अब वो एक्सपर्ट किस में था? वो एक्सपर्ट था अंडर 17 को। ही इज अ मास्टर बिकॉज every single year he made us qualify for Asian Cup, which is the Yeah. standard which they think is great and they celebrate that. Oh, 4 बार qualify करा, okay, okay, fine. But let's go. But वो कब शुरू हो रहा है इस साल का? 7 नवंबर को। ये कब वापस आएंगे? 2 नवंबर को। तो तुमने उस अंडर 17 की भी ले ली अब, बिकॉज ना तुमने उसके लिए कैंप लगाया अभी तक, ना तुमने उसके लिए कोच लगाया। And the other guy who's good enough to do this is Ishfaq Ahmed. Ishfaq Ahmed is real Kashmiri. He's not going to leave you. He's getting 2.5 lakh rupees. तुम 40,000 पे देते हो सालो, वो नहीं जाने वाला। वो तंग आ चुका है तुम्हारे से, पूछ लो जाके उससे, ठीक है? So you have done something which is you've screwed up the अगर तो ये होता तो managerial part, under 15 part and under 17 part. Why? Because you want to screw me. अब इनको समझ नहीं आता कि रंजीत बजाज is not going to do well if the team does well. India will do well. इनको समझ क्यों नहीं आती है कि अगर शाबाशी मुझे नहीं मिलेगी, इनको मिलेगी साले, बिकॉज दे आर द फेडरेशन। इनको बोला जाएगा कि ओ माय गॉड, तुमने अपने बिगेस्ट हिटर को, सबसे बड़ा जो तुम्हें गालियां निकालता है फॉर द गुड ऑफ इंडिया, तुमने उसको लगाया है। क्या बात है यार। अच्छा, नाउ इफ आई डोंट डू वेल, तो इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ दे कैन कीप मी क्वाइट कि तूने बोला था लेके गया, तू नहीं लेके गया, तेरे को कर दिया था, चुप करके बैठ जा। यस और नो? तो इनके लिए तो अच्छा ही अच्छा है। बट साले इतने खुंद की कमीने हैं ये कि दे डोंट केयर अबाउट देयर ओन कंट्री। हाँ भाई, और क्या है? दे डोंट केयर अबाउट, दे रादर स्क्रू मी, बट दे नॉट स्क्रूइंग मी, दे स्क्रूइंग आवर कंट्री मैन। ओके, अगर तुमने इसको भी देनी थी, मैं तो 1.5 महीने से बोल रहा हूँ ना कि वर्ल्ड कप है। चलो तुमने को सबको पता है, साल से लोगों ने 30-30 मैच खेल लिए हैं। चलो 1.5 महीने पहले तो मैंने अनाउंसमेंट कर दी थी, अगर इवन इफ यू डिडंट नो फॉर सम रीजन यू केम टू नो कि ईमेल नहीं भी मिली, मिलेगी तुम्हारे को, तुमने तब दे देते विवियानो को यार। Now he will not do well. Now the country will get after him, and it's very unfair. The country will get after him because तुमने टाइम क्या दिया प्रिपरेशन का उसको? या अगर मैं होता, मुझे नाउ, अगर तुम हमारी इसकी जगह यहाँ पे कोई पाकिस्तानी बिठाते वहां का ISI एजेंट एज अ प्रेसिडेंट, तो वो सोचता कि मैंने इंडिया की कैसे लेनी है, तो फिर वो यही काम करता कि इनको बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं देनी, इनको जाने से 1 दिन पहले कैंप लगाएंगे, इनको भेज देंगे, आप बहुत मजा आएगा। तो लगता तो वही है ना भाई, बिकॉज तुम देखो सऊदी अरेबिया क्या करती है, वो अपना लीग, वहां रोनाल्डो खेलता है, बेंजीमा खेलता है, वो लीग बंद कर देते हैं 1 महीने के लिए। उन्होंने हॉलिडे दे दी उनको कि तू साले फ्री में पैसे ले। रोनाल्डो की सैलरी देखो कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने 1 महीने के लिए प्रिपरेशन करनी है अपनी एशियन कप के लिए, बिकॉज दैट्स गोना मेक अस क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। इफ यू आर नॉट इन द टॉप 4 इन द एशियन कप, यू विल नॉट क्वालिफाई ऑटोमेटिकली। They take that so seriously. 1 month qualification, 1 month की preparation। और हमने क्या किया, हमने 1 दिन पहले भेजा है, और वो भी 4 अलग फ्लाइटों में, बिकॉज हमारे प्रेसिडेंट ने कहा था मैं प्राइवेट जेट कराऊंगा आपके लिए, प्राइवेट जेट, और वो उससे हुआ नहीं। और फिर 4 फ्लाइटों पे गए हम, और चौथी फ्लाइट जो पहुंची है वो मैच खत्म होने के बाद पहुंची है। मतलब 4 बंदे जो हैं वो बेंच पे भी नहीं बैठ सके हैं। तो हमारे और उसके बाद जो हमारे सुनील छेत्री, संदेश जिंगन पहुंचे, रात को 2 बजे पहुंचे, जो सवेरे 11 बजे मैच था, और 4 बजे वो सुबह 7-Eleven से जाके नीचे अपने होटल के, 7-Eleven होता है जो ग्रोसरी शॉप होती है, वहां पे गंदे से सैंडविच जो मिलते हैं वो खा रहे हैं, क्योंकि इनके पास खाना नहीं है। और वो 1 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं। वहां पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर बैठे हैं हमारे लिए उज्बेकिस्तान में, वो हाई अल्टीट्यूड है, मैं माउंटेनियर हूँ, हमारे को एक्लेमेटाइज करना पड़ता है। इंग्लैंड की फटी हुई थी इस बारी, बिकॉज दे वर गोना प्ले एट हाई ऑल्टीट्यूड। वो वायग्रा खाने के लिए तैयार थे, ठीक है, और ये साले कुत्ते भेजते 1 दिन पहले, तो फिर वो कहते हैं हमारे से भागा नहीं गया। भागा कैसे जाएगा? वो वायग्रा खाने के लिए तैयार है सालो, और ये तुम्हारी प्रिपरेशन है। सो जस्ट सी व्हाट यू आर डूइंग एंड देन अच्छा, हमारा होम कलकत्ते में, अफगानिस्तान हमारे से पहले पहुंची हुई है वहां पे, हमारे होम में। So see, this is where you come to know you don't stand for your country now, and you don't care about your country. Because if you allow, and there's nothing to do with Mohan Bagan, by the way. Mohan Bagan, उसके बाद मोहन बगान ने किया, उनको अलाउ कर दिया, फिर उसकी अगली बार 3 और अलग क्लब ने ये किया
कि हमने प्लेयर नहीं भेजने अपने क्योंकि वो इंजर हो जाएंगे। अब तुम मुझे बताओ, आरसीबी अगर कह दे मैंने विराट कोहली नहीं भेजना बिकॉज वो इंजर हो जाएगा, तो आरसीबी को जला नहीं देगी इंडिया पब्लिक? हाउ कैन यू से that I will not send them for national duty and let the, I know it's the prerogative of the club and I know contract होता है, but कौन से देश में ऐसा होता है? वहां चेल्सी भी नहीं कहती, मैन्यू नहीं कहती, आर्सेनल नहीं कहती, और तुम कहते हो यार. Why? Because the federation doesn't say anything. See, where commercial interests take over. Now, for example, जो अब हो रहा है एशियन कप में, पहले तो इन्होंने क्या यार भाई, पहले इन्होंने सैफ कप को ना पोस्टपोन कराया 1.5 महीने के लिए. क्यों? क्योंकि हमने एशियन कप खेलना है, ठीक है. अब इन्होंने एशियन कप से विड्रॉ कर, उसको पोस्टपोन भी करा दिया, इनको एशियन कप से भी विड्रॉ करा लिया. वहां से हमें पैसे मिलने थे फॉर प्लेइंग इन द एशियन कप. वी वर गोना गेट समथिंग लाइक व्हाट $1 million, $800 something thousand. अब फीफा कह रही तुम्हारे को हम फाइन लगाएंगे, और हमारी जगह बांग्लादेश ने कहा प्लीज हमें एंट्री दे दो. वो पहुंच गए हमारी जगह. एशियन कप में बांग्लादेश आ गई अब, बिकॉज कौन नहीं आएगा, क्योंकि सैफ कप तो पोस्टपोन करा दिया था हमने, तो बांग्लादेश कहती हम खेलेंगे. अब क्या होएगा, अब सैफ कप में बांग्लादेश हमें ठोकेगी, क्योंकि वो तो बाद में है, क्योंकि हमारी प्रेपरेशन क्या है, प्लेइंग अगेंस्ट ब्राजील. तो चलो, अब चलो सारी बात मान ली, चलो इनको ना 500 करोड़ मिल रहा था फॉर दिस मैच. चलो ठीक है, हम बहुत गरीब है, हमारी बुरी हालत है, फॉरगेट द नेशनल टीम, 500 करोड़ ले लो, हमारा फुटबॉल चल जाएगा. तब 70 करोड़ खुद दे रहे हैं. दे आर पेइंग 70 करोड़, फेडरेशन इज पेइंग 70 करोड़ टू देम टू फॉर द प्ले. इनके अकाउंट में कितने पैसे हैं? 9 अगस्त को इन्होंने निकाले ऑडिटेड रिजल्ट, जाके देखो ये अभी निकाल के ना लगा देना जब बात कर रहे हैं हम. इनके अकाउंट में 1.25 करोड़, मतलब 1.25 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में है. और कल्याण चौबे जी कहते हैं एक्सको में जाके हमने एडवांस पेमेंट कर दी है ब्राजील को, और हमारे को रीइंबर्समेंट मिल जाएगी. जो कहां से मिलेगी? तेरे डैडी ने देनी है रीइंबर्समेंट तेरे को? कहां से मिलेगी रीइंबर्समेंट? अगर रीइंबर्समेंट मिल रही होती, स्पॉन्सर होते, साले आईएसएल करा ले. आईएसएल कराने का कॉस्ट 14 करोड़, उसका कॉस्ट पिछले साल 3 करोड़, 17 करोड़ रुपए कॉस्ट था आईएसएल आई लीग कराने का लास्ट ईयर, ठीक है. एंड फॉर रनिंग द एंटायर फुटबॉल लीग वाज अनदर 20 करोड़. 35 crores is the budget of the Indian team for 1 year. Indian football, 40 crores. You spend 2 years budget on one match with money which you don't have. And Mr. Kalyan Chaubey, you are going to go in 2 months. And you are going to leave us in a gap of 69 crores. 2 years budget का हमारा gap हो जाएगा. जब आप आए थे पावर में, तो आपके पास एक you had 40 crores in the account plus 25 crores की FD. एफडी भी तोड़वा ली, जो 20-25 साल से थी, वो भी खर्च कर दी, ये भी कर दी. एंड मेरे से क्यों किया इसने? गारंटी ले लो, कुछ ना कुछ तो है. बिकॉज द पॉइंट इज दैट इफ यू आर गोइंग टू डू दिस एंड यू गोइंग टू डिस्ट्रॉय द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एशियन कप. में कौन खेल रहा था एशियन कप में? ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू बी फाइटिंग अगेंस्ट अस फॉर दैट 5th spot in the World Cup or 6th spot in the World Cup, like Malaysia, like Indonesia, like all those teams. So do you think we needed those preparation? How's आप एक काम करो, संदेश जिंगन को फोन करो या अनवर अली को फोन करो, उससे पूछो भाई साहब आपका क्या कहना है, हाउ डू यू फील लाइक प्लेइंग अगेंस्ट विनीशियस जूनियर. वो बताएगा तुम्हारे को. वो निकाला होगा साले गालियां तुम्हारे को कि मेरे को तुमने इस स्टेज पे आके मेरी कंट्री में तुम मुझे ब्राजील के साथ खिला रहे हो कुत्तों. बांग्लादेश से तुम जीत नहीं सकते हो, ब्राजील से खेलना है हमने, और वो भी 70 करोड़ दे के. मतलब हम पैसे कि तुम ये लो, पैसे लो और तोहफा कबूल करो. The fact that Vinicius Junior might not even play. Bro, that's even worse because Vinicius Junior goes one-on-one and goes all the time. So he'll probably make it once in everything. जो बाकी player हैं, जो young जिनको मौका मिलेगा, they are trying to prove that they want Vinicius Junior's place. And all the people who are on the Brazil team all are superstars. So the one who's in the second team probably plays in the Brazilian league for Palmeiras or Corinthians or something like that, and he's going to come and screw them. So how is it inspiring for the next generation? Is it very inspiring to see Brazil play, or is it inspiring to see Brazil thrash India at 20 or something, 15, 10, whatever? Exactly. ठीक है, तो you have to understand that it's not like you can go and motivate the Indian team and tell them, oh ठोकना है इनको, और वो ठोक देंगे. ऐसा नहीं होएगा.
अगर मैं जाके Imagine if we मोटिवेशन have करूँ ना people in उनको, the dressing if I room. actually go into motivation for them and say before the match, oh yeah, come on, हमने ठोकना है, साले बोलेंगे भाग जाओ, मैं क्या बकवास कर रहा है. See, you have to live in reality, man. Okay, and if you don't live in reality, and you're doing, see, this is what I'm saying. They're doing anti. This is what is known as anti-national. ये anti-national ही है. और क्या है ये? Everything which can do worse, every decision which होता है ना कि चलो ये करे is a better for Indian football. Whatever the worst decision is, they always take that, and you take it in all the through. जितनी भी decision इन्होंने अभी तक ली है, एक अच्छी बात बता दो इन्होंने की है. Where India, people have said, fans have said, oh, very good, yeah, you've done a good thing. अगर कोई गलती से अच्छी काम कर भी देते हैं उसको फिर दे मेक श्योर दे फक इट अप. लाइक फॉर एग्जांपल वो वुमेन्स टीम में कोच लगाया था स्वीडिश, वो जीतने लग गए, उसको निकाल के बाहर निकाल के फिर लगा दिया. Exactly. Sir, just a follow-up question on what Lucky said, that like this was not the first time that you have been approached for a managerial role, because as far as I remember, when India played the first ever, when India made its debut in futsal. AFC futsal. Yep. So that is, thank you for asking me this, boy, because that is exactly the reason I don't want to go. पिछली बार Minerva was the first ever champions of futsal in India, and then Delhi FC again. Minerva only was the second ever champions of futsal. Both the times he beat Mohammedan Sporting in the final. Both the times the coach was Joshua. Okay, Yes. and the only coach which was qualified in futsal was Joshua. Other side the coach was me, not qualified by certificates, but it was me, and we beat them both the times in the final. And they told me that okay, I forced them because ये इन्होंने पिछली बार भी मिस कर दिया था club championship, and I said what the hell, but club championship you can only play if your country plays in the main national rounds of the qualifiers. But I knew कि अगर इनको एक बार मैं entry करा दूंगा, they'll have to play every single year, because if once you go into something and then you don't go the next year, your ranking points of your country get affected. Coefficient में futsal भी आ जाता है फिर. That's why other countries are ahead of us, because they futsal rankings are also put in the ranking, the coefficient points are put in for that. And if you actually miss that out after you put in once, then it's they don't take that lightly. So मुझे पता था they'll do it, but I wanted to again be manager, man. I didn't want to be coach, manager. मेरे को फिर वही duty पे वही लगाया. I made sure I paid for my own tickets when we went to Tajikistan. I paid for my own hotel room, and they said no, AFC pays for it. I said I don't give a fuck. I'll still pay for my own thing. Why? Because tomorrow I don't want to say कि तुमने पैसे दिए थे मेरे. So I went there, and I came to know that the other coach had brought a goalkeeper from somebody who had not ever played in the national. क्या qualification थी to come into the national team, that you should have played in the futsal league. तो हमारे पास futsal के बहुत तगड़े players हैं यार. मुंबई में जाकर देखो futsal कितनी तगड़ी है यार. We could have got so many players from there. And you could, yeah, exactly, Kalinga Rangers. So We had you Scott could have Moran, got, we had Nikhil Mali. and yeah, but they were already there, na. But I'm saying the other ones were also good. I could have got the entire fucking Yep, team, yep, man. Yeah, they were, and there were a lot of people in Goa who used to play that, the other Neymar thing. There are a lot of people in Chandigarh, in Punjab, in Delhi, Delhi, who used to really play a lot. Calcutta plays a lot. Bangalore plays a lot. We could have got so many players, but the rule was that you have to play it in the futsal league. But somehow, इन्होंने कोई प्लेयर लेके आए जो इंग्लैंड में रहता था, वो आके हमारे लिए गोलकीपर खेलेगा. And our two main goalkeepers was Scott Morris and Augie. Augie was the Mohammedan Sporting goalkeeper. Yep. So, and Kalinga Rangers as well, I think, है ना? No, I don't Kalinga know. Rangers. Yep. Yeah. So Augie started the match, and first match we were winning 3-1, man. And I said, they changed the keeper. I said, no, don't change the keeper. No. But he was the coach. He changed the keeper. Instead of putting Scott, he put the other guy. Yeah. And we count 3 goals, we lost. And from that day, I didn't interfere at all. And I fucking called up Shaji and I told him that, listen, this is happening. I'm not to be blamed. I've got nothing to do with this. You've not given me this permission. And I sat out. You can ask all the players. I sat out and I didn't do anything. The first match when this happened, that's it. So I knew what was going to happen when they sent me as a manager this time. And I didn't want to go through it because I could see sitting there that I can beat this country. I can beat this country if you play my way. Because I have beaten the style which Joshua was trying to play. And he's trying to play that style and he got beaten there. So you have to understand that if you send me, there's no point of sending me unless you want to win. I'm there to make you win. Now, you can't say go there, but don't do the things you do to win. Do the things we want you to do, but make us win. That's not going to happen. No? So it happened to me in the AFC. It's never going to happen to me again. You think I wanted to go to AFC as a manager? I've been the manager of the Indian senior cricket team, man. I've done 21 one days and 7 tests.
ठीक है? Yes. And there I used to have 8 people working under me. I was the manager of the Indian team when Dhoni was there, when Tendulkar was there, when Kumble was there. 3 captains I served under. I was the manager of the Pakistan cricket team when the ICC event and Champions Trophy happened in 2006, and Bob Bulmer was the coach. And ICC put me as the manager of the Pakistan team. I was traveling with them for 45 days. Seriously. So मैंने इनका मैनेजर बनना है फुटसल टीम का जाके. You think that's what my fucking life's ambition is? Exactly. I mean, that's quite absurd to be honest. And I mean, when we're talking about Scott Moraes, so matlab, that season I followed the entire futsal league, and especially since I'm from Mumbai as well, and since I've followed Kalina Rangers very closely. You cannot bench someone like Scott Moraes, and those decisions were, of Wow. course, Imagine, man. I want to start with Scott. So he did not ask him. By the way, he didn't want to take Scott. So I had a fight with this guy. He had dropped him. You can ask Scott that when the national camp was going on, he says, "No, I don't want this guy. I want Augie because he was playing with him, and he deserved it. But this other guy from the UK who has never played in the futsal league. Now there were all the other things like people traveling with their girlfriends there, players traveling with their girlfriends there and staying in the same hotel and doing all that shit, which I could not take as me being me. They're representing your country. You should have zero distractions, man. And obviously, you can't have different rules for someone. The whole team can see that ये बंदा बाहर से आके खेल रहा है और कभी नेशनल फुटबॉल लीग नहीं खेला हमारी, मगर ये तब भी खेल रहा है और हमारे इतने दोस्त है कलिंगा रेंजर्स में जिनको खेलने नहीं दिया और इन सबसे 10 गुना बेटर हूँ. This is what I'm saying. It can't be unfair. People give up sports because of this. जब तुम ऐसे काम करते हो. Because even if you're good enough and then you don't get it and somebody gets there because not what they know but who they know, that is what fucks you up. Sir, I would like to ask you something. So, जैसे आपने mention किया कि like, I mean, if his name is Scott, the goalkeeper, who was substituted. Sir, as you say कि like उनका skill set के हिसाब से he was like not given the chance in the second half or something like that. Sir, No, no, ऐसा no, no. problem No. Second half में नहीं. He didn't have to make. You see, Augie was playing very well. We were leading 3-1. So you don't need to. It's not like other places in futsal that you need to make changes. Goalkeepers are not changed unless there's a Yeah. bad injury. Even in futsal or normal match, futsal में भी goalkeeper change नहीं होता कभी. Yeah. So why would you change him? Why would you do it? When That's we are fine. see if we are losing differently, we are winning 3-1. Why would you fuck it up? He's not tired. It's a futsal match which happened for 20 minutes. He doesn't even move up. I mean, why would you do that? And even if you wanted to do that, you put in Scott, someone who can be coming up and he can play with his feet. You have an extra man and you don't even let them attack because you keep down. Because the moment you come up, you keep possession, man. They can't do fuck all because you'll keep possession. They can only defend. In futsal, so people don't know I'm talking about futsal. So the keeper's coming up. मैंने अपने बाहर जाके एटर साइड में कीपर को ऊपर भेज दिया यार. मैं ऐसा बंदा हूं तो मैं तो और भेज नहीं दिया, ठोक दिया साले ने जाके. तो scored a फिर goal. yeah, man. So you got to have that confidence, and if you don't, if you're gonna be a defensive, see in futsal, in football, you can't be defensive anymore, man. I mean, if you are a good team who you've got, people like Simeone as the coach and Simeone, his son, playing there, and you're playing counter-attacking football, it's a different thing. Same way, if you've got Haaland and you're going there and crossing, great. But all our fucking strikers are Chetris. And you keep crossing to them. That's why I don't allow crosses. Because I want you to play on the feet because my Chetris will be killing you guys. Doesn't matter how big you are on the feet, on the ground. Not in the air. So I'd rather have them go shoot in the second bar or give a cutback. Always. Never cross. So these are just rules which I have put for Indians doing well. Not following this. What is suiting India? Don't look at foreigners and play. See, Exactly. when Man City won it with 100 points both the times, they didn't have a striker. They had a false nine. So you don't need a striker. You need someone to tap the ball in as long as you give those balls and you overload in their half. So we need tap-ins, man. We don't need Sunil Chetris or we don't need fucking Haalands. We need tap-ins, positional play.
They had both their centre backs for 5'8" and 5'9". Positional play. You don't need centre back 6'4". So if Pep Guardiola can win the English Premier League without any actual centre backs and a striker, there goes your game plan. Exactly. और जब मैं यहाँ पे टेक्निकल कमेटी में, अच्छा एक और बताऊं, मैं जो मैनेजर की बात थी, मैनेजरियल पोजीशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन कह रहे थे वो, तो तुम्हारी टेक्निकल कमेटी ने क्यों इंटरव्यू ली मेरी? एंड व्हाई वाज द टेक्निकल कमेटी आस्किंग मी क्वेश्चंस अबाउट के तेरा प्लेइंग स्टाइल क्या है? मैनेजर का प्लेइंग स्टाइल कब पूछते हो? मैनेजर की फिलोसफी और विजन कब पूछते हो? Do you understand how fucking fake that was? Yeah. I am with Sabir Pasha and all those guys sitting there and Subrata Pal, and why they've never taken an interview of a manager before. AFF just appoints managers. इस मैनेजर की इंटरव्यू ली गई 12 बंदों के सामने. So that shows you. And then उसमें उनसे जब मैं टेक्निकल कमेटी से बोलता हूँ कहते क्या करोगे, मैंने कहा my team, my attacking midfielders are always in the half space and they are taught that because the maximum goal. वो कहता सुब्रता पाल, मैं टेक्निकल बातें ना करो. साले टेक्निकल कमेटी से टेक्निकल बातें ना करूं, फिर किससे करूं मैं? So this is where we stand, bro, in Indian football, because they are so backward. I mean, honestly, it is really hurtful to listen all this, and I mean, at this point ना हंसी आ रही है कि क्या चल रहा है. भाई मैं भी हंसता हूँ, फिर उसके बाद मैं रोता हूँ कि शिट मैं खुद पे हंस रहा हूँ क्योंकि मैं इंडियन फुटबॉल. So the joke's on us, the joke's on me. Okay, so I was about to ask you, like, now that since Viviano has taken up this responsibility of being a coach, media ना अब एक narrative set कर रही है कि now that you are against Viviano, despite you have clarified everything. See, but bhai, yeah, I am supporting him fully, but see, if you send me there, even if one of those boys wants to, please me, he will not listen to Viviano. If there's even this much of a doubt in even one of those boys, that's wrong for India, man. Yeah. There has to be one general, one leader, and everyone has to believe in his playing style. Even if it's Viviano or me, doesn't matter who it is. Now he's gone. Now India has to win by hook or crook. I really hope they do really well. And that is why there has to be no doubt left in the mind of the people. Everyone has to be on the same page. So if I wanted to screw him up, I would have gone. But I wouldn't have screwed him up, nah. I would have screwed India up. But that's not how AFF thinks. I wanted to ask you, like, did you have a word with Viviano after all this controversy? Yeah, like, did you establish? No, bro. See, no, I didn't have a word with him. I sent him a message through Marcus and it's exactly the same thing. That I have never said that he should not be there. He's never said I should not be there. Both of us said the same thing. That his vision and philosophy, my vision and philosophy, different. That's why he had said no, and that's why I had said no.